Good morning, everyone. I am Preeti, Assistant Professor in Commerce from Shree Atam Vallabh Jain College. Today, we are going to discuss about the free consent. Free consent is one of the most important essential of Indian Contract Act 1872. For making a contract is a valid contract, there should be free consent. That means free consent is not caused by these 5 points. Before discussing the free consent, I need to discuss about the what is consent. Consent means when the two parties are taking same thing in a same sense. That means this is also called the consensus ad idem. Like if I am offering something to the second party and the second party is taking the same thing in a same sense, this is called the consent. For example, the person has two houses, house A and B. He is going to sell his house A and he offered this thing to his friend, but the friend is understanding that is he is going to sell his house B. That means in the both party they are not taking the same thing in a same sense. Free consent as per the Indian Contract Act 1872, it will not be caused by these 5 points: coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. We will discuss it one by one. You can see this chart. And the first 4 points, we can see what will be the effect if this point will happen in contract. The contract will be voidable. That means voidable only at the option of plaintiff party, because otherwise it is valid in the eyes of everyone. But if plaintiff party will take action, then it will be voidable. Or what about mistake? In case of the mistake, contract is void. You need to correct your mistake. We will start with the coercion. Coercion is covered under section 15 of Indian Contract Act 1872. In simple word, coercion is a physical threat. You can see coercion is a threat or force used by the one party against the another for compelling him to enter into an agreement. You can see it is a threat, physical force. You are threatening to the second party, then he will enter into a contract. Yeah, you can say it is an unlawful detaining and threatening to detain any property of belonging to the other party. You can see there's a one example. X threatened to shoot Y and compel him to sell his car for 50,000. If I already told you, coercion is a physical threat. If you are like compelling the second party by threatening him, by at the gunpoint, this is called a physical threat. In this case, the consent is not free. That is obtained by giving physical threat to the second party. And in future, it can be voidable at the option of Y. I already told you in first 4 points, the effect will be voidable. Otherwise, if Y will not take any action in future, then it is valid in the eyes of everyone. But if he will take action, he proved this thing, the contract physical threat is used by the X to him, then it can be voidable at the option of Y. The feature of coercion, there must be a threat, of course, physical threat है, or any act that is forbidden by law. आप कोई भी ऐसा act use कर रहे हो that is forbidden by law, and you are forcing the other party enter into a contract. And coercion always move from the stranger. Stranger means the person who is not in our relation. Next, what will be the effect? I already told you. One is the most important effect, voidable. Every time I told you in first 4 points, the effect will be voidable. Voidable means it is voidable, but at the option of plaintiff party. When the consent is obtained by the coercion, the agreement is voidable at the option of aggrieved party.
Next one, agar it is proved that physical threat is used by the one person against the other person, then the person who used the physical threat against the second person, then he will repay and return any amount he has taken from the second party. Coercion is also known as a duress in English law. We are using in Indian law, we are using coercion. Now the next point, undue influence. Undue influence means the relation between the two parties is like that. The one party is in a stronger position and the second party is in a weaker position. And you are in a position to dominate the will of the other party. As per the section 16, the person is deemed to be in a position to dominate the will of the other party. Like in these points, where he hold a real and apparent authority and stand in a fiduciary relation, and when he makes a contract with a person who is not in a position to understand, yeah, you can say he can't understand the provision of law, provision of contract due to his age, due to his illness or mental inability. I have shown this chart. Real authority means you can take the example of the master servant, parent child, principal teacher. Fiduciary relation में father son, guardian ward, doctor and patient. Normally हम जब हम बहुत ज़्यादा सिक होते हैं तो of course हम डॉक्टर पे ट्रस्ट पूरा करते हैं कि वो जो भी मेडिसिन देगा वो हमारे भले के लिए ही होगी. Next, third case में person who has the temporary effect the mental ability with the age, mental या physical weakness. Effect same, voidable only at the option of the plaintiff party. Like you can see aggrieved party whose consent is not free. And restitution means put the person same in a position he was that in that position before the entering the contract. If you have taken any money, any benefit from that person, you have to return it. Now, the next most important point, fraud. Fraud means, according to the section 17, fraud means false representation of fact, but you are making false representation willingly. You know this thing, that you are making false representation to the second party, but with a view to deceive the other party. You know this thing. It includes all facts that committed by the person with an intention to deceive other person, and false statement made knowingly and without belief that it's a truth. These are essential. Whatever you are making, you are giving facts or suggestion to the second party. That is not true, that is false, and you know this thing very well. And promise made without an intention to performing it. You are making a promise to the other party, but you know this thing कि you don't want to perform it. Or any act or omission according to the law, that is fraud. Or active concealment of the fact. Any fact which is main of the subject matter, whatever your contract is doing, in that case any information which is most important and you are concealing. ठीक है, आप बता नहीं रहे हो उनको. जैसे इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें पता है कि इंश्योरेंस के केस में हमें फैक्ट्स बताने होते हैं, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो प्रॉपर्टी में भी हम बताते हैं कि उसके सारे फैक्ट्स आपसे मांगे जाते हैं. दैट मीन्स यू डोंट नीड टू गिव एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. Now you can see frauds include these things, saying, I have already explained, making a false statement. Party knows this thing, the whatever he is going to tell to the other party, that is fraud. Next one, active concealment. Whatever the main material fact of the contract and you are hiding, ab wahi hide kar rahe ho. I have given example, the horse dealer sell a mare to the bee. A knows that mare has a cracked hoof, जिसको उसने fill किया हुआ है, but you can't find out that thing whenever you go for buy it, but the horse dealers know this thing. The promise made without an intention of performing, this is the third point. अगर आप किसी के साथ भी कोई प्रॉमिस कर रहे हो, बट आप you know already this thing कि आप उसे परफॉर्म नहीं करोगे.
Fourth point, any other fact fitted to deceive. Yeah, any act or omission as per the law that is declared to be fraudulent. Normally जब मैंने आपको एग्जांपल दी, जब भी हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस केस में यू नीड टू डिस्क्लोज ऑल योर फैक्ट. Now the main point is the mere sometime ये question जो है 5 marks में पूछा जाता है, mere silence is fraud or not. As per the caveat emptor rule, the person who is going to sell product to you, he is not under obligation to disclose whole truth. Actual में जब भी आप मार्केट में कुछ बाय करने जाते हो, you should be aware. Caveat emptor means let the buyer beware. बायर को अवेयर होना पड़ेगा. सेलर आपको, सेलर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो हर चीज आपको बताएगा. यू नीड टू वेरीफाई दिस थिंग कि आप इस केस में साइलेंस फ्रॉड नहीं मानी जाती, बिकॉज एज पर द कैवेट एम्प्टर रूल लेट द बायर अवेयर, नॉट सेलर. सेलर ने तो अपनी चीज सेल करनी है, उस केस में आपने देखना है कि यू विल बाय इट और नॉट. अब किस केस में साइलेंस फ्रॉड मानी जाती है, ये उसकी एक्सेप्शंस हैं. अदरवाइज हम कह रहे हैं साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. एज पर द कैवेट एम्प्टर रूल साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, लेकिन सम केसेस में साइलेंस फ्रॉड मानी जाती है. वेरी फर्स्ट पॉइंट, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट वाला रिलेशन, जिसमें आपको पता है सेकंड पार्टी पे आपको फेथ है, ठीक है. उस केस में जैसे अब फादर सन है, फादर सन की प्रॉपर्टी में वी नो दिस थिंग कि फादर अपनी प्रॉपर्टी का राइट जो है या अपनी प्रॉपर्टी का शेयर बच्चों को जरूर देगा, ठीक है. तो ऐसे केसेस में इन केस अगर पर्सन कोई भी मेन चीज हाइड करता है, ठीक है, तो उस केस में उसको फ्रॉड ही माना जाता है. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी कभी आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, इंश्योरेंस वाले ये जरूर मानते हैं कि आपको सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने चाहिए. अब वैसे हम कह रहे हैं कि साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में इफ यू आर हाइडिंग, यू आर कंसीलिंग सम फैक्ट रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी, तो दैट मीन्स आप फ्रॉड करते हो. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के केस में भी सेम माना जाता है, ठीक है. बोथ पार्टीज को फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, वट एवर द मेन मटीरियल फैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स में भी यही है. एंड शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है फॉर लाइक इशूइंग द शेयर्स टू द पब्लिक. तो प्रोस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाती है, यही माना जाता है कि कंपनी ने वो ट्रू इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज करी होगी. तो इन ऑल दीज केसेस साइलेंस जो है फ्रॉड मानी जाती है अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते फैक्ट. समटाइम साइलेंस जो है वो इक्विवेलेंट टू द स्पीच है. मतलब कई बार आप अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपकी नॉट रिप्लाई को हाँ भी माना जा सकता है, ना भी. इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल एज्यूम द हॉर्सेस साउंड, ठीक है. अब ए सेज नथिंग, और अगर ए ने कुछ नहीं कहा तो उसकी साइलेंस को क्या माना जाएगा, इक्विवेलेंट टू द स्पीच. दैट मीन्स कि हॉर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हॉर्स साउंड है, बट एक्चुअल में इफ द हॉर्स साउंड ना हुआ तो उस केस में ही विल बी लाइबल, ठीक है. अदरवाइज इसकी एक्सेप्शंस भी है कि लाइक देखो अभी तक हमने कहा साइलेंस फ्रॉड नहीं है अकॉर्डिंग टू द कैवेट एम्प्टर, बट उसकी भी एक्सेप्शंस थी. हमने 5 एक्सेप्शंस पढ़ी कि मैरिज सेटलमेंट, या आप कह सकते हो फिड्यूशियरी रिलेशन में, इंश्योरेंस में, इन सब केसेस में हम साइलेंस को फ्रॉड मानते हैं. बट सम टाइम हम कई चीजें साइलेंस को भी रिप्लाई माना जाता है. साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू द स्पीच. कई बार आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो उस केस में भी उसको हाँ या ना ही माना जाता है. इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द मैटर्स, ठीक है. बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हाफ ट्रूथ बता रहे हो, हाफ नहीं बता रहे, तो अब आप हाफ ट्रूथ को सुनने के बाद आप अगले हाफ को अपने आप अज्यूम नहीं कर सकते, वो रॉन्ग होगा.
ठीक है, वो रॉन्ग हो सकता है, आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो सकता है। चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस हो सकता है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर रहे हो सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, उस टाइम पर्सन साइलेंट था, उस टाइम कुछ और सिचुएशन थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है तो कुछ और प्रोविजन हो सकती है। ठीक है, तो सम टाइम जो साइलेंस है इक्विवेलेंट टू स्पीच मानी जाती है, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन में चेंज नहीं आना चाहिए, आपने तुरंत पहले हाफ ना बताया हो, फुल बताया हो और सर्कमस्टांसेस ना चेंज। अब इसके इफेक्ट्स क्या है? फर्स्ट इफेक्ट तो बेटा वही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम कहते हैं इट इज वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव पार्टी, लाइक प्लेंटिव पार्टी जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है। रेस्टिट्यूशन मीन्स yes, put the party in the same position in which they were in before entering the contract. Sue for damages, the aggrieved party जो है वो damages के लिए भी sue कर सकती है, क्योंकि fraud जो है civil wrong है, आप किसी के साथ कर रहे हो, आप किसी की property के साथ, किसी की family settlement के साथ, मैरिज टाइम के साथ कुछ भी फ्रॉड कर रहे हो तो वो सिविल रॉन्ग माना जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी या डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। Now the next point is misrepresentation. I think अब आपको fraud clear हो गया। Fraud और misrepresentation में थोड़ा सा difference है। Fraud हम कहते हैं कि false representation है, but you know this thing in advance कि you are making false representation to the second party with deceiving to the other one. ठीक है, but misrepresentation में थोड़ा सा change है इसमें भी false representation ही है, but the party is making false representation innocently. Innocently misrepresentation हो रही है और material fact की ही हो रही है, लेकिन इसमें कोई भी intention हमारी पार्टी को deceive करने की नहीं है, इसलिए ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाते हैं, लेकिन आप डैमेजेस से बच जाते हो, पेनल्टी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं आपने किसी की प्रॉपर्टी को हार्म किया, ठीक है, ऐसे केसेस में आप अपने आप को सेव कर सकते हो ये प्रूफ करके कि आपने जो भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करी वो इनोसेंटली करी और आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव सेकेंड पार्टी को डिसीव करने का नहीं था। ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ट्रू मान के कर रहे हो, और ब्रीच ऑफ द ड्यूटी जिसमें आप सेकेंड पार्टी ब्रीच ऑफ द सेकेंड पार्टी को जो आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हो विदाउट एनी इंटेंट, बट उसमें आपकी इंटेंशन नहीं थी पार्टी को डिसीव करना या किसी तरह का उसको डिसएडवांटेज देना। ठीक है, तो these are essential, there should be a representation, but such representation relate to the matter which is the main part of the subject matter, and it was made before the finalization of the transaction, and it must actually happen acted by the party, and it must have been made by the party himself or by his authorized agent. What will be the effects? Effects same रहेंगे, recession or recession or restitution. What is the meaning of recession? Yes, cancellation. Aggrieved party can cancel the contract, voidable जिसे हम कहते हैं, और restitution means put the party same in a position in which they were before entering the contract. Now the last point of free consent, mistake. Now, in simple word, mistake is error. Like just in case of the coercion, I told you coercion is a physical threat or undue influence is a mental threat. Fraud is a false representation, but actually you are making false representation, not innocently, intentionally. Or misrepresentation means you are making false representation unintentionally. Now, in simple word, mistake means error. Mistake are the two types, mistake of law and mistake of fact. देखो, mistake of law can any be of the three kinds: mistake of general law of country, mistake of foreign law, mistake of the private rights of property. But in case of the mistake of law is not an excuse. कभी भी लॉ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यू वर इग्नोरेंट ऑफ द लॉ और आपने इग्नोरेंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब आप किसी का कोई मर्डर कर देते हो और आप कहते हो मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर करना तो अलाउड ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
यू शुड नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, या आपकी जो मेन प्रोविजन है लॉ की, मतलब डीपली तो नो डाउट, आप अगर लॉ नहीं पढ़ रहे हो, आप लॉयर नहीं हो या आप जज नहीं हो, तो वैसी प्रोविजन हमें नहीं पता हो सकती, लेकिन कुछ प्रोविजन जो एज ए लाइक इंडियन रेजिडेंट होने के नाते मुझे पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा आप मिस्टेक करने के बाद ये नहीं कह सकते कि आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ द लॉ। Next है mistake of the fact. Mistake of the fact are two types: bilateral mistake and unilateral mistake. When mistake is happen in the both side, both parties are under mistake, it is called the bilateral mistake. There are the four conditions. There must be a mistake, and mistake must be of the both parties, मतलब on both sides. Mistake of the fact, mistake or mistake about the main essential of the contract. Whatever you are making a mistake that relate to the essential of the agreement. Now, mistake, there are the two types of mistake: mistake related to the subject matter, and the second, mistake regarding the possibility of performance. Mistake relating to the subject matter, it can be any of kind: existence of contract, existence of subject matter, mistake as to the identity of subject matter. Third, mistake as to the quantity of the subject matter. And next one, mistake as to quality of subject matter. And next, mistake about the price of subject matter. Now, the first mistake as to existence of the subject matter, I mean, ki whatever you are making contract, for example, you are making contract regarding the horse sale. Okay, horse dealer is selling a horse to you, but actually he doesn't know about this thing. The horse is dead now. Okay. Next, mistake as to the identity of the subject matter, in which I have given example that the person is a person has two houses, houses A and B, and he is going to sell his A house, and the person is understanding he is going to sell B house. So that means the identity of the subject matter is not clear to the both parties. Mistake as to the quantity of the subject matter, that means the person who is making contract regarding the 1000 unit, and if you will remove the 10 and writing the contract, that means you are making the contract of 100 units. Same with the mistake as to the quality of subject matter, and same as the price of the subject matter. If these type of mistakes happen, then you need to correct it, because in case of mistake, contract is not voidable, contract is void. Now the mistake about the possibility of performance. Sometimes the agreement is impossible to perform. In case of the circumstances arise, in that case, for the both parties, that is impossible to perform the contract. So in that case, even the contract is void, because that become impossible. The person will not liable for any damages. Mistake, आप मिस्टेक को करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, लेकिन अगर आप उसी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो तो करेक्ट करके आगे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकते हो, लेकिन पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं किसी ज्वेलर के पास जाती हूँ, सेम ही दिन मैंने मतलब रिंग बाय करनी थी, और सेम डे कोई और पर्सन आया हुआ, उसने भी रिंग ही बाय करनी थी। बाय मिस्टेक ज्वेलर को गलती लग जाती है, वो मेरी मेजरमेंट की रिंग दूसरे की बना देता है और दूसरे की मेरी मेजरमेंट की बना देता है। ऑफ कोर्स जब मैं जाऊंगी तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कोई भी होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसकी मेजरमेंट की नहीं है। तो इस केस में मिस्टेक जो है, इसको जो वो रिंग बनी है वो मेरे लिए वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हाँ, अगर वो ज्वेलर चाहे वो उसको करेक्ट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे के लिए वैलिड बना सकता है। तो अगर वो मुझे दोबारा उस रिंग को मेजर विद मेजरमेंट, सही मेजरमेंट के साथ बना के देगा, तो आई विल एक्सेप्ट। एंड नेक्स्ट है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसमें एक पार्टी अलोन ही अंडर मिस्टेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप ज्वेलर की भी एग्जांपल ले सकते हो, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको दी है, कि पार्टी जो है उसका
खुद का मतलब बाय मिस्टेक उससे ऐसी एरर होगी और वो उस एरर को, ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होती, उनकी वैलिडिटी कोई चेंज नहीं होती। हाँ, उसकी बनाई हुई पहली रिंग में एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन अगर वो मुझे सही करके देता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वाइड नहीं होता। लेकिन बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में बोथ पार्टीज ही मिस्टेक में है, तो ऑफ कोर्स जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वाइड ही है, लेकिन यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड बनता। और जो एग्रीमेंट है वो वाइड तभी होगा जब मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विथ। ठीक है, और इफेक्ट क्या है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट ही वाइड है एट द ऑप्शन ऑफ द ईदर ऑफ द बोथ पार्टीज, और यूनिलेटरल में एग्रीमेंट वाइड है ओनली अकाउंट ऑफ द मिस्टेक। अगर मिस्टेक करेक्ट हो जाती है तो उसको हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। So these were the points we have discussed. Now you can understand easily coercion is a physical threat, undue influence is a mental threat, and fraud is a false representation made by the one party to the other one with intention to deceive, and he made this false representation intentionally. And misrepresentation, false representation but made innocently, and mistake, the two types, bilateral or unilateral. Bilateral mistake when the both parties are on mistake and the agreement is void, and the second one unilateral, in that case it will not affect the validity of the contract, then you can make your mistake, आप उसको correct भी कर सकते हो, and you can in future you make it valid. Thank you so much.